The national anthem, please, which will be rendered by the Honorable President's band. Kindly be seated, please. Ladies and gentlemen, it is my privilege to request the Honorable President of India to light the traditional lamp and formally inaugurate the International Conference and Exhibition of the Aerospace and Aviation in 2047 with our Honorable Guests of Honors and the President of Aeronautical Survey of India and incumbent President of AESI. Thank you very much, Honorable President. Thank you very much, distinguished dignitaries on the stage. I now have the privilege of requesting the President of the Aeronautical Society of India, Dr. G. Satish Reddy, President of the Aeronautical Society of India and former Secretary of Defense R&D and Chairman of DRDO, to kindly give his welcome address, please. Namaskar. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Science and Technology, PMO, Department of Space, Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Minister of State for Defense and Tourism, Sri Ajay Bhatt ji, Chairman ISRO and President-elect of Aeronautical Society of India, Sri Somnath ji, the eminent people who are present here, heads of the various organizations, secretaries of Government of India, eminent scientists, academicians, professors, industries, students and media, Namaskar and good morning. I am pleased and honored to welcome Honorable President of India for the momentous occasion of 75 years of Aeronautical Society of India. I am also pleased to welcome the Honorable Ministers, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Ajay Bhatt ji, and all the people who are present here for this International Conference on Aerospace and Aviation 2047. Aeronautical Society of India, established in the year 1948 with the vision to synergize the efforts of the entire aerospace ecosystem here in the country, bring everyone onto one platform, discuss, resolve the issues, lay the way ahead, and work towards the future, laying a roadmap, and also advising the or providing the necessary advisories to the government to come out with the policies. And over the years, the country has come up
so well in the aerospace sector that we have established ourselves in the Department of Space. We have achieved so many great heights and we are standing tall in the world. We have made our own helicopters, we have made our own fighter aircrafts, and we are a missile power. And in the civil aviation, we have established in the country state-of-the-art infrastructure which stands tall in the world. And we have reached the very close to Atmanirbharata in the aerospace and aviation sector. On this momentous occasion of 75 years of Aeronautical Society of India, and having done so much, now it is our duty to lay the roadmap for the future to see that the country is leading in the aerospace and aviation by 2047. Let us all discuss, debate, and lay the roadmap and create the ecosystem to become the leader, making the vision of Honorable Prime Minister a reality. I once again thank Honorable President for gracing the occasion, inaugurating the exhibition, and being with us in the inaugural as the chief guest. I also thank Honorable Ministers Dr. Jitendra Singh ji, Sri Ajay Bhatt ji for gracing the occasion. Thank you very much. Jai Hind. Namaskar. Thank you very much, sir, for a most wonderful, dynamic welcome address. Thank you very much. We'd now like to present mementos to our distinguished dignitaries on the stage. And for that, I request Sri Satish Reddy and also Mr. Shomnath to kindly do the honors of presenting mementos to the Honorable President and to our Honorable guests of honors, please. To the Honorable President of India, I request Dr. G. Satish Reddy, President of Aeronautical Society, to kindly welcome her, please. I request Sri Shomnath, Secretary Department of Space and Chairman Space Commission, to present the Honorable memento to the Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh, please. And I request the Dr. Satish Reddy to kindly present a memento to Honorable Minister, Mr. Ajay Bhatt, please. On the momentous and remarkable occasion of 75 years celebration of Aeronautical Society of India, we're happy to release compendiums, books, and souvenirs on this occasion. May I request the Honorable Guests of Honor on the stage to release the documents, and the Honorable President will be releasing the first copy of the release, please. To begin with the celebrating of 75 years of innovation and excellence, the Indian Aerospace and Aviation Compendium chronicles a remarkable journey of India's aviation history from its nascent beginning to beginning the global stage in the aerospace technology area. The milestone publication reflects the nation's achievement, beliefs and thoughts, and also the pivotal contributions that have shaped the skies and propelled India into a new area of aviation prowess. May I request Dr. Jitendra Singh, the Honorable Minister, to kindly release the compendium, please.
We now have the release of the compendium on 75 years of Indian aerospace and aviation. Moving further, Indian aerospace and aviation's community has made remarkable progress so far and waiting to spread its wings in the coming years. By the year 2047, Indian aviation's global leadership in aerospace and aviation towards this goal. I request the Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh, to kindly do the honors of presenting the book and releasing it and presenting the first copy to the Honorable President of India, please. We now have the release of the document Aerospace and Aviation Vision of 2047, and we will request Honorable Dr. Jitendra Singh to do the honors of releasing it and giving the first copy to the Honorable President of India, please. We will now have the release of the souvenir, and for that I request Honorable Minister Mr. Ajay Bhatt to do the honors of releasing it and also giving the first copy to the President. On account of celebrating 75 years of women's excellence in aerospace and aviation, this compendium showcases the remarkable contributions of women who have spread its new heights and leading barriers and shaping the future of the industry. We'll now have the release of the compendium on women in aerospace and aviation. And for that, I request again Mr. Ajay Bhatt to do the honors of releasing it and giving the first copy to the President of India. This is compiled by 5 authors from Indian aeronautical industry on integrated aircraft health management for beginners under the able guidance of Padma Shri Dr. Kota Harinarayana. And we'll now have the release of the book, Integrated Aircraft Health Manager for Beginners, and the Journal of Aeronautical Society of India, started in 1948, was transformed into an international journal naming Journal of Aerospace Sciences and Technologies. I request the Honorable Minister, Mr. Dr. G. Satish Reddy, to kindly request Mr. Ajay Bhatt to do the honors of releasing this book and presenting the first copy to the Honorable President of India. This is the e-journal. Which has just been released, and there you have it. Ladies and gentlemen, we will now show you a short movie on growth of aerospace and aviation in the country, and I request you to kindly relax and watch this movie, please. In the ever-evolving domains of aviation, defense and aerospace, where innovation and excellence are the North Stars, an esteemed institution shines as a beacon, lighting the way. The Aeronautical Society of India, AESI, where fervour, expertise and unwavering commitment propel us towards the limitless heights of accomplishment. India's aviation journey takes flight in the early 1900s, guided by the trailblazing aviator J.R.D. Tata, who embarked on our nation's inaugural commercial flight, igniting a passion that would shape our destiny in the skies. In 1948, under the illustrious patronage of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru,
the Aeronautical Society of India came into being, making a lasting impact of this legendary institution on defence, space and civil aviation. Defence. In the year 1940, against the backdrop of the tumultuous World War II, a visionary by the name of Seth Walchand Hirachand dared to create Hindustan Aircraft Limited in the city of Bangalore. By 1951, this endeavour came under the protective wings of the Ministry of Defence. Within its hangars, the groundbreaking HT-2 trainer aircraft was brought to life. As the world continued to evolve, 1963 marked a turning point. Hindustan Aeronautics India Limited took centre stage, pledging itself to the production of MiG-21 aircraft and their powerful engines. In the following year, 1964, a fusion of multiple entities resulted in the birth of Hindustan Aeronautics Limited, HAL. Then, in 1969, HAL introduced the HF-24 Marut, the nation's maiden indigenous aircraft, the first fighter aircraft in Asia. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, formed in 1958, and the year 1983 marked a remarkable milestone. India made astounding strides in missile technology through the Integrated Guided Missile Development Programme, IGMDP, under the visionary leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. Under this programme, missiles such as Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag were designed and developed. This program further led to the development of the air shield and ballistic missile shield. This era of achievement also witnessed the inception of the BrahMos supersonic cruise missile, born out of a strategic partnership with Russia. The journey continued in 1984 with the inception of the Aeronautical Development Agency, ADA, as a DRDO establishment which started the Light Combat Aircraft program. Teaming up with HAL, ADA developed a state-of-the-art supersonic lightweight aircraft. The first Tejas squadron became operational in 2016. As the years progressed, ADA embarked on the development of a naval version of the aircraft and was successfully completed with a takeoff and landing demonstration from the aircraft carrier INS Vikramaditya. HAL has developed a wide range of helicopters like ALH, LCH and LUH. Today, India's path of progress extends into the future with the development of the LCA Mark II and the ongoing design of the Advanced Medium Combat Aircraft AMCA. DRDO has developed UAVs and Rustam II male UAV is in advanced stage. A large number of startups have come up with multiple types of drones and swarm drones, both for civil and defense applications. In 2019, India achieved a significant milestone with Mission Shakti, demonstrating India's prowess in anti-satellite technology and becoming the fourth nation globally to accomplish this feat. भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया. Space. In the year 1962, a new era of possibility emerged with the birth of the Indian Space Research Organisation, ISRO. The year 1975 ushered in a historic moment as India unveiled its first satellite, Aryabhatta. It was an entrance into the grand narrative of space technology. With the launching of Bhaskara and Rohini satellites and progressing through the development of launch vehicles like PSLV and GSLV, ISRO had demonstrated an impressive journey of growth and advancement. However, it was in 1984 that the nation etched its name in the stars. Squadron leader Rakesh Sharma became India's first citizen to venture into the cosmos. Fast forward to 2014, the Mars orbiter mission Mangalyaan embarked on a remarkable journey. In 2014, the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV Mark III, Bahubali rocket of India,
was developed with higher payload capacity. In 2023, India achieved another historic milestone by successfully landing Chandrayaan-3 on the lunar South Pole. This accomplishment made India the first nation to achieve this feat and the fourth globally. ISRO's audacious human spaceflight program, a daring odyssey, aimed to forge the cutting-edge technology required to catapult crewed spacecraft into the embrace of Earth's low orbit. Civil aviation. In the realm of civil aviation, India reigns as the world's third largest market. A remarkable testament to this stature is the record-breaking air traffic of 105 million passengers in 2022, with a significant 84 million of them being domestic travelers. The aviation infrastructure, led by Indian industry pioneers, expanded not only nationally but also internationally. With the world's increasing demands for air travel, these industries were well positioned to seize international opportunities. By 2026, the air transport sector is poised to contribute 8.5 million jobs and a staggering $1 trillion to the global economy. In 2023, the Ministry of Civil Aviation introduced Udaan 5.0, a program aimed at enhancing regional connectivity and fostering social and economic development nationwide. The CSIR, National Aerospace Laboratories CSIR-NAL, rose to prominence, serving as the nation's premier R&D institution in civil aircraft and aerospace technologies. It was instrumental in bringing to life significant aircraft programs, including the two-seater all-composite aircraft Hansa-NG and the 19-seat multi-role light transport aircraft Saras Mark II, bolstering air connectivity under the Government of India's Udaan scheme. Industries which were very few in the beginning have grown in large number, shaping themselves from built to print to built to specifications. Over the years, a world-class industrial ecosystem has emerged, with more than 500 industries working in the aerospace sector as Tier 1 and Tier 2 industries. Indian industry became part of the global supply chain and started exporting systems and subsystems globally. Academic institutes started introducing courses in aeronautics, and slowly, many institutes in the country have introduced bachelor and master's courses in aeronautics, producing large pool of skilled engineers. Make in India initiative by the visionary Prime Minister Narendra Modi played a crucial role in boosting local production. मेक इन इंडिया अभियान दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है. As we look back on India's journey in defense, space and civil aviation, it is evident that the sky is not the limit. It's merely the starting point for the boundless aspirations of a nation that has truly taken flight. What a wonderful film on the growth of aerospace and aviation in the country. Let's give a warm round of applause for all the makers of this wonderful film and for all the pioneers of aerospace and aviation sitting in the hall today. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are now moving to the next and very important segment of the inaugural session. It is my privilege, ladies and gentlemen, to request Honorable Minister of State for Defence and Tourism, Mr. Ajay Bhatt, to kindly deliver his address, please. महामहिम राष्ट्रपति जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंत्री,
डॉक्टर सतीश रेड्डी जी, अध्यक्ष एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर सोमनाथ जी, अध्यक्ष इसरो, और तीनों सेनाओं के हमारे अधिकारीगण, हमारे वैज्ञानिक गण और भारत की हर क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली महान विभूतियां, हम आज माननीय राष्ट्रपति जी के संरक्षण में सब यहां पर बैठे हैं और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। एक लंबे सफर के बाद 75 साल हम पूरे कर रहे हैं और जो प्रगति हमने की है उस पर विचार भी हो रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारना अनिवार्य है। पिछले 75 वर्षों में भारत में एरोस्पेस और रक्षा के महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन का अनुभव किया है। आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में हमारी यात्रा उल्लेखनीय मील के पत्थर से चिन्हित की गई है, जिसमें HAL, DRDO, इसरो, CSIR, NAL जैसे संगठनों की स्थापना के साथ साथ हमारी एरोस्पेस क्षमताओं को आगे बढ़ाने में शिक्षा जगत और उद्योग का योगदान भी शामिल है। DRDO ने हाल ही में भारत के वैमानिक और विमानन क्षेत्रों को काफी आगे बढ़ाया है। प्रमुख उपलब्धियों में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का विकास, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव HAL के सहयोग से विकसित एक सफल बहुभूमिका उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल है। इस समय दुबई में वहां का एरोस्पेस का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे दोनों विमान हेलीकॉप्टर और तेजस वहां पर अपने करतब दिखा रहे हैं। दुनिया हमारे महत्वपूर्ण कार्य को आज देख भी रही है। मैं अभी शामिल हुआ था दुबई में, वहां के रक्षा मंत्री जी से बात हुई तो आज ही लौटा हूं। तो जिस तरह आज भारत का सम्मान हमारा हर देश में हर क्षेत्र में बढ़ा है वो ऐतिहासिक है। ये पहली बार हुआ है कि हम अपनी तीनों सेनाओं के जवानों को, अधिकारियों को, पायलट्स को अपने एक जहाज से दुबई ले जा रहे हैं और दिन भर वो वहां की टेक्नोलॉजी दुनिया भर की देखेंगे, स्टडी करेंगे और शाम को लौट के फिर यहां आएंगे। ये पहली बार हमने इतिहास रचा है। वहां के रक्षा मंत्री जी ने स्वयं ही आशा व्यक्त करी कि मैं आपके पायलट्स और आपके जवानों के साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूं। यह भी एक ऐतिहासिक कदम रहा है। हम हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्म भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, कृषि क्षेत्र भी है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात UAE में हुई है कि हम स्वामी नारायण बाप्स हिंदू मंदिर बना रहे हैं। उसका नाम लिखा है हिंदू मंदिर और 27 एकड़ जमीन माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर प्रभावित होकर, भारत से प्रभावित होकर वहां के जो रूरर हैं उन्होंने दी है और पहली ईंट उन्होंने रखी है। उसके लिए भी कल हम आग्रह किया, हम वहां गए थे और मन गदगद होता है कि सर्व धर्म संभाव में 200 जातियां, 200 धर्मों के लोग वहां रहती हैं और सबके सब लोग एड़ी चोटी लगाकर विश्व में हिंदू मंदिर बनाने पहली बार जा रहे हैं। संभवतः प्रधानमंत्री जी अति शीघ्र वहां जाकर
दुनिया को समर्पित करेंगे। इस तरह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। डीआरडीओ ने निगरानी और युद्ध के लिए यूएवी तकनीक के साथ साथ आकाश, पृथ्वी और उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों जैसी वायु रक्षा प्रणालियों में भी प्रगति की है। भविष्य की परियोजनाओं में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एएमसीए और ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान टीईडीबीएफ शामिल है। ये उपलब्धियां और चल रही परियोजनाएं वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में भारत के कद को बढ़ाने में डीआरडीओ की भूमिका को उजागर करते हैं। सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव लाते हुए कई रणनीतिक पहल की हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। रक्षा औद्योगिक पार्कों की स्थापना एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके क्षेत्र के विकास को और अधिक उत्प्रेरित कर रही है, जो रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देता है। ये पार्क निकट भविष्य में इनोवेशन और विनिर्माण उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देते हुए कंपनियों को कई प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और सहयोग को बढ़ावा दिया है। यह कदम न केवल बाहरी विशेषज्ञता लाता है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर सरकार का जोर और रणनीतिक साझेदारी मॉडल की शुरुआत निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने की दिशा में सराहनीय कदम है। इन पहलों के परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है, जिससे भारत के लिए 2025 तक रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंच तैयार हुआ है। इसके अलावा रक्षा नवाचार संगठन की स्थापना, रक्षा उत्कृष्टता योजना के लिए नवाचारों का शुभारंभ और रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरक पहल रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती हैं। ये पहल स्टार्टअप और इनोवेटर्स को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं, जिससे नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। एरोस्पेस के सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में सरकार की सक्रिय भागीदारी और समर्थन ने परिवर्तनकारी विकास के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया है। यह प्रक्रिया जो पहले से ही चल रही है, इंगित करती है कि एरोस्पेस क्षेत्र तेजी से भारत की आत्मनिर्भरता और निर्यात उन्मुख उद्योग का एक महत्वपूर्ण चालक बन रहा है। स्थापित वैश्विक कंपनियों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने की हमारी संभावना और क्षमता अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। व्यापक सहयोग, संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से हमारी घरेलू क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। अनेक छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमईएस पर निर्मित हमारे एरोस्पेस उद्योग की ठोस नींव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। ये एसएमईएस जो शुरुआत में डीपीएसयूज, एचएएल, डीआरडीओ और इसरो के लिए उप घटक और घटक स्तरों पर आपूर्तिकर्ताओं के रूप में काम करते थे, अब वैश्विक एरोस्पेस कंपनी की मांग को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एरोस्पेस उद्योग रोजगार पैदा करके निर्यात राजस्व बढ़ाकर और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करके अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता के साथ उद्योग विभिन्न विमानन क्षेत्रों में बड़े अधिग्रहण, नागरिक उड्डयन में भारत की उभरती प्रमुखता
इंजीनियरिंग प्रतिभा की उपलब्धता और सरकार द्वारा एक सक्षम नीति ढांचे जैसे कारकों से प्रेरित है। भारतीय एरोस्पेस उद्योग संरचना उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है। कई निजी कंपनियां तेजी से प्रगति कर रही हैं। ये कंपनियां भारत को एरोस्पेस संरचनाओं, घटकों और असेंबली के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित कर रही हैं। अग्रणी वैश्विक ओईएमएस ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं, जो वाणिज्यिक और रक्षा विमानन और हेलीकॉप्टर दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस क्षेत्र ने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखा है। हालांकि एंड टू एंड एरोस्पेस समाधानों के लिए और अधिक सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमारा सामूहिक प्रयास उन्नत लड़ाकू विमान, नवीन प्रणोदन प्रणाली, मानव रहित और मानव युक्त विमान, सेंसर तकनीक, अंतरिक्ष अन्वेषण और एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के एकीकरण जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगा। इसके लिए मौजूदा क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सार्वजनिक संस्थाओं, निजी उद्योगों और शिक्षा जगत के बीच तालमेल हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां नवाचार, दृढ़ संकल्प और सहयोग वैश्विक एरोस्पेस और विमान क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा करता है। मैं पुनः एक बार अध्यक्ष जो हमारे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस समय है, रेड्डी साहब, बधाई देता हूं कि आपने, आपकी टीम ने इतना अच्छा काम यहां पर किया है और माननीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग आज यहां पर बैठे हैं उनके नेतृत्व में, और एक दूसरे को जानने का अवसर भी आपने प्रदान किया है और एरोस्पेस में कितना हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी जानकारी भी एक किस्म से 75 साल पूरे होने पर आज आपके द्वारा जो सार्वजनिक की गई है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। मैं माननीय श्री अजय भट्ट जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। I now request Honorable Minister of State with independent charge of Science and Technology, Minister of State for the PMO, Minister of State for Pensions, Public Grievances, as well as Department of Space and Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, to kindly give his address. Honorable President of India, महामहिम राष्ट्रपति परमादरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित रह करके हमारी हौसला अफजाई भी की है और उत्साहवर्धन भी किया। मंत्रिपरिषद में हमारे मित्र साथी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका संबोधन अभी आपने सुना, एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सतीश रेड्डी जी, जो बधाई के पात्र हैं इस सुंदर आयोजन के लिए। I was just now telling him that not only the hall is full, but both quantity as well as quality wise, it is full of rich brains. हमारे साथ बैठे हुए इसरो के चेयरमैन और प्रेसिडेंट इलेक्ट ASI श्री S सोमनाथ जी, जिनका पहले तो परिचय किया जाता था, लेकिन अब वो चंद्रयान के बाद
और अभी अभी रक्षा राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि दुबई के रक्षा मंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि उनका पायलट्स के साथ चित्र लिया जाए। हम भी यहाँ वो दृश्य देख रहे हैं। सोमनाथ जी के साथ यदि आप कभी प्रवास पर निकले तो इनकी सेल्फियां ज्यादा होती हैं बाकियों की कम। और यही बदलते हुए भारत का दृश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बधाई के पात्र हैं सतीश रेड्डी जी और सारे पदाधिकारीगण। एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता को भी 75 वर्ष हुए और एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की यात्रा के साथ साथ एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की यात्रा भी चली है और भारत की विकास यात्रा का चश्मदीद गवाह एएसआई भी रहा और एएसआई का विकास भी। गत 9-10 वर्षों में लेकिन जिस प्रकार का क्वांटम जंप हुआ है, बिकॉज वी आर साइमल्टेनियसली टॉकिंग ऑफ एरोनॉटिक्स, एविएशन, डिफेंस, टूरिज्म, ट्रैवल, लेकिन जो क्वांटम जंप हमने 10 वर्षों में देखा इसको दुनिया स्वीकार कर रही है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई विश्लेषण करेगा इतिहासकार तो इन 10 वर्षों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विज्ञान और नवाचार को आम नागरिक के जीवन में सुविधा और सरलता लाने के लिए माध्यम कैसे बनाया जा सकता है इसका रास्ता दिखाया। As students of science we have been taught not to speak without evidence and the evidence is कि जहां 75 हवाई अड्डे हुआ करते थे 2014 से पहले, आज उसकी संख्या लगभग दुगनी 150 से ऊपर हो गई। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करने लगे। You go to any airport and you will actually see this happening. कल हम सफर कर रहे थे तो एक सज्जन की चप्पल पीछे ही रह गई, इतनी भीड़ थी। आजकल हवाई अड्डों में इतनी भीड़ हो जाया करती है। उड़ान नाम की स्कीम भी मोदी जी के ही कार्यकाल में आई गई। And I think we have the confidence to say now that the aviation sector of India is no longer the elite sector. And the credit goes to Prime Minister Modi for having turned aviation sector and the aviation travel or the air travel as a common man's travel, no longer a luxury of the elite. इसी प्रकार अंतरिक्ष की बात करें, कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता, सबसे पहले अमेरिका ने मानव उतारा था चांद की धरती पर सन 1969 में। वो वहां पर टहलपोशी भी करके आए, बीबीसी ने उसकी एक फिल्म भी बनाई। लेकिन वहां पर पानी के अस्तित्व का प्रमाण वो नहीं लेकर आए, हमारा चंद्रयान उसके बाद गया और लेकर आया। और इसलिए फिर जैसे भी फिल्म में दिखाया गया मंगलयान, आदित्य, आने वाले समय में गगनयान, जो सोमनाथ जी की देखरेख में अभी प्रगति में है। 2025 तक गगनयान पहला मानव अंतरिक्ष में जाएगा। हालांकि राकेश शर्मा जी तो गए थे लेकिन वो सोवियत मिशन था, तो टोटली इंडिजिनस मिशन नट बोल्ट से लेकर के पहली बार 2025 में। फिर 2030 में जिस प्रकार की समय रेखा बनाई गई है, भारतीय मूल का मानव चांद की धरती पर उतरेगा और सन 2035 में हमारा एक स्पेस स्टेशन होगा। और ये सब इस प्रकार से संभव क्यों हुआ या सरल क्यों हुआ कि जैसे मीडिया ने लिखा कि मोदी हैज अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। हम अपनी ही बनाई हुई बंदिशों में काम करते थे। 8-10 लोगों की टोली, बाहर से किसी को आने की इजाजत नहीं। चंद्रयान की जब लॉन्चिंग हुई तो 10,000 लगभग दर्शक वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे और 1,000 मीडिया कर्मी। और जब वो वहां उत्सव मनाया गया तो
एक मीडिया वाले आए तो कहने लगे, एक आलोचक ने एक ट्वीट किया है कि व्हाट इज न्यू, इतना ज्यादा क्यों जश्न मनाया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट? ही सेड फर्स्ट टाइम। मैंने कहा यही न्यू है। और इससे नॉट ओनली द रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, आपने बाहर जो देखे ये स्टार्टअप्स, ये सारे के सारे पिछले 3-4 साल में आए हैं। 2020 में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। विद इन 3 years वी हैव मोर देन 150 स्टार्टअप्स। और इनमें से आपने कुछ शुरू वाले भी देखे, अनुकूल वगैरह, लेकिन जो फर्स्ट वन था स्काई रोड, दे हैव ऑलरेडी टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर्स, और वो अपने रॉकेट की फैक्ट्री भी खोल बैठे हैदराबाद में। यानी क्या इससे ये अर्थ लगाया जा सकता है कि हमारे पास प्रतिभा की कमी ना थी, हमारे पास योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने की क्षमता भी थी, आंखों में अरमान भी थे, दिल में सपने भी थे। आपने देखा सारा भाई किस तरह से बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान लेकर जाते थे, लेकिन अभाव था तो साधनों का, अनुकूलता का। वो अनुकूलता मोदी जी ने दी, एंड द मोमेंट वी गॉट द इनेबलिंग milieu, all these wonders have happened in just 3-4 years. आज दुनिया हमारा लोहा बांधती है। चंद्रयान जो साउथ पोल पर लैंड हुआ है, उसके जो उपलब्ध हो रही हैं जानकारियां, इनपुट्स, अभी तक तो वो साझा नहीं की गई, बाकी देशों के साथ भी उसका विश्लेषण हो रहा है, लेकिन दूसरे देश उसकी प्रतीक्षा में है। द अदर कंट्रीज आर वेटिंग फॉर द इनपुट्स गैदर्ड बाय अस, क्योंकि हम ही लाए थे कि भाई चंद्रमा पर H2O मॉलिक्यूल्स हैं, जीवन की संभावना भी हो सकती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो सारी कहानियां जो आपको दादी माँ सुनाया करती थी कि चांद पर कैसे लोग रहते होंगे, गोरे के, सफेद के, परियां नाचती होंगी, वो फेरी टेल्स, उसका पहली बार वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा अगर किसी ने दी तो भारत की मिशन ने दी। और इसलिए आज नासा जैसे इंस्टीट्यूट, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट आर आल्सो वेटिंग फॉर अस टू शेयर विद देम। एंड देयरफॉर आज हम इस स्थिति में हैं कि जहां पहले भारत बाकी देशों की अगुवाई में काम करता था, आज बाकी देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और अब ये हम पर निर्भर है कि वेदर हम तैयार हैं कि नहीं। एंड आई एम ग्लैड दैट विद दिस, और इसी तरह ड्रोन्स की बात हुई। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर, इतनी सारी रेगुलेशंस हमने लगा के रखी थी कि IIT के कैंपस में ही ड्रोन, या ट्रेनिंग रिसर्च कैंपस में ही ड्रोन विकसित किया जा सकता है, और जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगाई थी वही उस ड्रोन को इस्तेमाल भी करते थे। यू कुड नॉट डेवलप ड्रोन आउटसाइड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो क्लैंडस्टाइनली वो कमरा ले लेते थे कहीं IIT में, वहां ड्रोन डेवलप करते थे और बेचते आप ही को थे जिन्होंने कानून बनाया था। मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में लगभग 2000 ऐसे कानून हटा दिए जो बाधक बनते थे, उनमें से ये भी था, और आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया। उसी तरह से अंतरिक्ष को किया, उसी तरह से नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई। तो कहने का तात्पर्य कि भारत की क्षमताओं को एविएशन में, एरोनॉटिक्स में, डिफेंस में पहली बार अगर पूरी तरह से आउटलेट मिला है टू एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल, तो शायद इसलिए कि अब एक ऐसी सरकार थी जहां नीति निर्धारण के स्तर पर उस प्रकार के निर्णय लेने का क्षमता भी थी और आत्मविश्वास भी था। दूसरा, आज हम दुनिया के साथ उसी स्तर पर हैं, चाहे नवाचार है, चाहे हमारा शोध है, जिस पर के बाकी देश हैं। अब फिर से ये बात ऐसी नहीं कही जा रही क्योंकि हम सब वैज्ञानिक बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप स्मरण करिए, हमारे यहाँ टेलीविजन कब आया? लगभग 1970 में, छोटा सा चित्रहार लेकर। फिर बाकी नगरों में तो 1975 तक पहुंचा, क्रिकेट मैच वैच आता था। जबकि अमेरिका में 1950 के दशक में घर घर में टेलीविजन मौजूद था, और 1960 में जो वहां एक बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें जॉन कैनेडी ने निक्सन को हराया था, दैट वाज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेलीविजन डिबेट। और यहां मालूम नहीं था कि टेलीविजन क्या और डिबेट क्या। हम 15-20 साल पीछे चलते थे। आज क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल डिफेंस में भी किया जाएगा, मिसाइल्स में भी किया जाएगा, हेल्थ में तो होगा, बाकी से उसमें वी आर अमंग द 7 एलीट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हु आर इनटू क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये सारी बातें हमें समझ करके लोगों तक पहुंचानी होगी। पहली बार
विज्ञान का और वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ा है समाज में भी. एंड होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट. जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई, सोमनाथ जी मेरे साथ थे. व्हेन आई वाज आस्क्ड टू मेक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, द फर्स्ट सेंटेंस आई सेड वाज, द लॉन्चिंग इज बाय इसरो बट द मिशन इज होल ऑफ साइंस. एंड बिफोर दैट आई आस्क्ड सोमनाथ जी कि मैं कहूँ आपको बुरा तो नहीं. बोले नहीं, सब इंस्टीट्यूट्स के नाम लीजिए. टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के NAL तक सब ने उसमें योगदान किया था, और सारा राष्ट्र जुड़ गया टीवी के पर्दे के साथ उसे देखने के लिए. और इसी तरह से अभी रक्षा राज्य मंत्री ने बड़े विस्तार में बात की डिफेंस सेक्टर की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल सिस्टम की. आज हम इस स्थिति में है कि वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स टू अदर कंट्रीज. ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है. और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे ही विभाग से, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण से, CSIR की संस्था जुड़ी हुई है, जिसकी DG पहली महिला DG. इस 9-10 वर्षों में महिला वैज्ञानिकों को भी एक प्रमुखता का स्थान मिला है. आदित्य की मिशन हेड इज अ वुमन एंड चंद्रयान की सेकंड हेड इज आल्सो वुमन. मुझे प्रसन्नता है माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख कहते हुए कि मोदी सरकार ने 85 साल के बाद CSIR के लिए पहली महिला DG ढूंढी, डॉक्टर कलाई सेल्वी जी. और ये उन्हीं के नेतृत्व में हुआ कि ये जो ड्रोन का इजाद करने का काम NAL बंगलौर में संपन्न हुआ. और इस तरह से जो आज की थीम है, दी एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047, नॉट ओनली अप्रोप्रिएट ऑल्सो वेरी फ्यूचरिस्टिक. और जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि अमृत काल से स्वर्णिम काल तक जाना, तो मुझे विश्वास है कि शताब्दी भारत का चित्र कैसा होगा, कैसी तस्वीर होगी, उसका चिंतन मंथन करने का भी ये 2 दिवसीय गोष्ठी एक अवसर रहेगी. और उस लक्ष्य तो कैसे प्राप्त करना, उसकी रूपरेखा बनाने का भी एक अवसर रहेगा. सो दैट द नेक्स्ट फ्लाइट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जब हम शताब्दी भारत का उत्सव मनाएं, तो हम भी एरोस्पेस की जगह दुगनी गति से वहां पहुंचे और गर्व से हम कह सकें, जो अगली पीढ़ी के हमारे विज्ञान हैं, कि शताब्दी भारत के निर्माण में हमारा भी योगदान रहा. We were the pilots of the flight that brought India to 2047. धन्यवाद बहुत बहुत. Thank you very much indeed. That was our Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh, giving us the most wonderful address. Ladies and gentlemen, it is my privilege and an honor to invite our Honorable Chief Guest, Srimati Droupadi Murmu, Honorable President of India, to kindly deliver her inaugural address, please. Kindly give her a warm round of applause. Thank you. Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh ji, Minister of State for Defense and Tourism, Shri Ajay Bhatt ji, President of the Aeronautical Society of India, Dr. G. Satish Reddy ji, Chairman ISRO, Shri S. Somnath ji, members of Aeronautical Society of India, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am happy to take part in the function organized to commemorate the 75th anniversary of the Aeronautical Society of India, an organization which is rightly credited with revolutionizing the modern life in many ways. From its humble beginnings in 1948 till today, for 75 years, the Aeronautical Society of India has worked tirelessly to ensure that not only the aeronautics as a knowledge system grows by leaps and bounds, but it also impacts
life of every citizen in a substantial manner. I am delighted to learn that the Aeronautical Society of India has 19 branches at all the important centers of aviation in this country. It has a membership of more than 14,000 drawn from all major aeronautical establishments and has 63 corporate members from both national and international sectors. I congratulate all of you on this remarkable journey and extend greetings to all of you for your outstanding contribution to the advancement and dissemination of the knowledge of aeronautical science and aircraft engineering that has made the aeronautical profession as one of the most sought after and glamorous careers. Ladies and gentlemen, the themes of this conference reads Aerospace and Aviation in 2047, 75 years of advanced aeronautics in India, achievements, challenges, and beyond. I have been told that this conference is a milestone in the boundless world of aviation, showcasing cutting-edge and pioneering technologies and visionary insights into a aviation industry's future. I am happy to know that some of the highlights of this conference include issues such as green initiatives by aero industries, the impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning of avionics, human capital development and infrastructure growth, empowering women in the sector, and encouraging startups for creative disruptions. The Aeronautical Society of India, on its 75th anniversary, is introducing the Startup Quest 2023, which offers up to rupees 2 lakhs as prototype grant to 3 innovative startups. This is a praiseworthy and admirable step for nurturing, identifying, and promoting talent. I commend the entire aerospace and aviation community for their efforts and contribution to the Amritkal vision of the technology-driven and knowledge-based economy. Ladies and gentlemen, aviation is a remarkable feat of human ingenuity that brings the imaginative power to reality with seamless fusion of technology. Aerospace and aviation are simultaneously humbling and almost superhuman activities that afford us the vast global connection of the planet we inhabit and exploration of space and beyond. As we celebrate the journey of the Aeronautical Society of India, we cannot help but marvel at the achievements and breakthroughs our nation had made in the fields of aviation and aerospace, space technology, missile technology, and aircraft technology. Whether it is the fate of successful completion of the Mars mission or showcasing the end-to-end capability in safe landing and roving near the moon's south pole, a place considered beyond human endeavor, India has proved that it has the willpower, potential, and capacity to accomplish what it sets out to achieve. The highest standards of quality, cost effectiveness, and punctuality has been the hallmarks of all of our projects. Future Aditya L1 and Gaganyaan missions will not only boost India's standard and embolden reaches, but will also help humanity as a whole. In the year 2003, in his speech at the seminar cum exhibition Aerospace Technology Challenges in the Millennium, my illustrious predecessor, President APJ Kalam, called for self-reliance in aerospace systems to enable us to stand steadfast during critical times with the flexibility to make configuration
changes. The impetus towards self-reliance has happened in a big way. In the last decade, several policies and other initiatives have been taken that cover wide-ranging issues like the implementation of regional connectivity scheme UDAN, enhancement of public-private partnerships, encouragement of MSMEs, increasing FDI via direct route, preference for indigenously designed, developed, and manufactured IDDM products, establishing different corridors, and commissioning of the indigenously designed hypersonic wind tunnel. Ladies and gentlemen, though we have made long strides, there also remain many challenges. The aerospace sector has been undergoing to transformative phase by bracing up for speed and runway-independent technologies for defense purposes, air mobility and transportation. There is also the demanding task of cultivating human resources well-versed and ready to tackle these issues in tight earnest. At the same time, there is also a need for upskilling and reskilling of the current workforce. The aerospace industry is no stranger to innovations, disruptions, and challenges. I am sure that all the industry leaders, experts, and enthusiasts gathered here today, and all the aerospace professionals and policymakers will take up these challenges and resolve for the better future. Ladies and gentlemen, the decarbonization of aero propulsion is an onerous task we will have to undertake because climate change and global warming are threatening the very existence of humans. The development of sustainable jet fuels is one of the much needed steps to decarbonize the economy, but it is hardest to achieve because traditional fuels are of very high density. Finding non-fossil sustainable resources which could replace these traditional fuels should be the priority objectives because we are approaching a climate tipping point. To reduce our carbon footprint, we need to rapidly adopt new propulsion technologies at a large scale such as electric, hydrogen, and hybrid. Ladies and gentlemen, with the trust and belief that this conference would provide valuable solutions to many of the challenges, I once again applaud this Aeronautical Society of India for its 75 years of dedicated service to the nation and relentless commitment to the advancement of the reservoir of knowledge. I wish you all the best and hope that this conference will enrich, expand, and enhance the awareness and understanding of aerospace. I would exhort all of you to dream which defies all limits and redefines the possibilities of scientific discovery, enliven and stars which illuminate skies and investigate the cosmos which remains unexplored. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Indeed, that was our Honorable President of India giving us a wonderful inaugural address marking the formal introduction of aerospace and aviation in 2047. Kindly rise for the national anthem, please.
Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, kindly remain in your places till the Honourable President and distinguished dignitaries leave the stage. Let's give them a warm round of applause, please. The inaugural session comes to a close.